playing in front of our home crowd, this is something which we always missed. और हमारी पूरी कोशिश है कि पीसीबी की आप लोगों की इतनी जद्दोजहद के बावजूद देखें वो आई है, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, अच्छा मैसेज जो है पूरी दुनिया में गया कि वी आर पीसफुल कंट्री। पहले तो हम सब लोगों को इस चीज़ की मुबारकबाद जाती है, हम सब पाकिस्तानियों को, कि यहाँ पे श्रीलंकन टीम आई। और मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस टीम पे अटैक हुआ था वही टीम पाकिस्तान में आई और वो यहाँ पे खेले और उनको जो हॉस्पिटैलिटी मिली यहाँ पे, वो आई थिंक जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें और जितना हमारी जो फोर्सेस हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुल बनाया ना कि अगेंस्ट जिम्बाब्वे, वर्ल्ड 11 और अब श्रीलंका, तो आई थिंक इन सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जाती है इस चीज़ की। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Honorable Minister, to give us this opportunity to meet you and your officials in the Ministry of Sports here in Islamabad. It's a pleasure to be here after 8 years with the Sri Lankan team. I personally came with the Sri Lankan team to show the solidarity of Sri Lankan government and the people of Sri Lanka to Pakistan and Pakistani people and Pakistan government, because your people have helped us a lot when we are in a very sad situation. For last 23 years we had a bloody war for last 26 years, and in that time actually Pakistan gave us a huge support in militarily and economically. So we never forget these things in our mind. Sri Lankan people are very grateful to Pakistan. That is why we thought with all the difficulties to come to Pakistan. I think our cricketers have bitter memories in 2009 with RPGs and all the fires went on and they are still can remember, but all the players and show the solidarity to the Pakistani government, Pakistani people, and I think from this we can start cricket again in Pakistan. And in April we are going to have the emerging cup tournament in April. I think I invite all the other countries to come and have matches in Pakistan. There is no problem. All the security has been given to us. They looked after very well, and very warm Pakistani spectators have given us a full support in the ground as well. So thank you very much, the minister and the government. We are always with you. मज़ीद न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मालूमाती वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल लैया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।